Today's class will discuss about the load balancer. So what is load balancer? Most of the time, right, we'll be working on servers. जिते भी हमें ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛେ କ୍ଲାଉଡ ରେ ଆମେ EC2 instance ରେ various virtual machines create କରିଛେ, right? ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା machines ରେ କାମ କରିଛେ, but ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ कंप्लीट गोटे क्लस्टर रे काम करिबा तो मल्टीपल सर्वर रे काम करिबा जोटे एप्लीकेशंस हमर मल्टीपल सर्वर सहित कनेक्टेड अछि, राइट? तो आमे जो एप्लीकेशंस यूज होछि से एप्लीकेशन रो जो कस्टमर्स बा यूजर्स जो कनेक्ट करूछंती बा एक्सेस करूछंती तो हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द नेटवर्क ट्रैफिक्स to the applications, right? Network traffics, whatever comes to the applications, right, to the appropriate servers. So whatever the servers are there where the applications are running, how we can distribute, right, the network traffics equally so that no servers will be overloaded or crashed. Let's understand more in detail, right? So जदि हमें टेक्निकली देखिबा what is load balancer? Load balancer in computing, load balancing refers to the process of distributing set of tasks over a set of resources with the aim of making their overall processing more efficient. This is where we use the load balancing, right? Distributing the set of tasks, जो भी task আছে तो केमते distribute करिवो in the multiple set of resources. अगोटे कौन कहूची? A load balancer acts as the traffic curve sitting in front of your servers and routing the client requests across all the servers capable of fulfilling those requests in a manner that maximizes speed and capacity utilizations and ensures that no one server is overworked. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ सर्वर से काम करूचे, राइट? सर्वर से एप्लीकेशन रे काम करूचे तो गोटे एप्लीकेशन जदि हमर पाखरे गोटे सर्वर अछि, राइट? जदि हम एप्लीकेशंस कौन जदि पॉपुलैरिटी गेन कला, मोर कस्टमर्स डे बाय डे एक्सेस कले तो बेले पहले कौन होना कैसे एप्लीकेशन जो सर्वर रे रन होचे हमें जदि तार रिसोर्सेस वा कैपेसिटी न बढ़ाइबा कौन होना it cannot able to handle the request because will not have that much resource capacity to handle those requests, so our server will get crashed. So in this scenario what we have to do, we need to add one more server or multiple servers to the pool where we can connect to the applications, right? So सेठी कौन करिया हमें ऑटो स्केलिंग यूज करी करी हमें रिसोर्स को बढ़ाई दबा इसके ऑटो स्केलिंग ऊपर हमें पढ़िबा तो वंस हमें ऐड कर देला पर हमर कोन मल्टीपल सर्वर रही गला तो मल्टीपल सर्वर रही गला पर हमें इक्वली केमती जो टास्क बा जो ट्रैफिक आसुची यूजर एक्सेस ताको केमती शेयर करिबा, राइट? सो सही हिसाब से जो ट्रैफिक एक्ट एज ए राउटर और ट्रैफिक कर्व, राइट? वी कैन से acts as a route which routes the network traffic to the different available servers. Okay, so if a single server goes down, if a single server goes down, the load balancer redirects traffic to the remaining online servers, right? तो आमर जदि suppose पांचटा application आमे suppose तीनटा server आमे यूज करूचे, right? तो आमे एटी गोटे load balancer यूज कले तो लोड बालांसर हमर तीनटा सर्वर कनेक्ट हेछि जदि बाय चांस कोन अछि जेतो रिक्वेस्ट आसुची, राइट? यूजर रिक्वेस्ट जदि आसुची एटिकी तो यूजर रिक्वेस्ट कोन करछ ना इक्वली ट्रांसफर करिवो कोन नेटवर्क सब जगह सर्वर को जदि बाय चांस गोटे सर्वर डाउन हे गला ए सर्वर सपोज काम करूनी तो कोन होबना आउ जो दीटा रेस्पेक्टिव सर्वर अछि इक्वली रिक्वेस्ट सेंड करी. ओके, तो एथि पई हमें लोड बालांसर इज वेरी इंपोर्टेंट एंड यूजफुल. तो ये जो एग्जांपल टा बर्तमान में बुझली एटा एग्जैक्टली सेम एग्जांपल्स जे अछि क्लाइंट यूजर इंटरनेट एटा हमर रहिला लोड बालांसर जोटे कि हमर आज कोन ट्रैफिक कप बा राउटर हिसाब रे काम करछि जोटा से कोन करछि ना ट्रैफिक जा भी एंड यूजर बा क्लाइंट पाखर आसुछि से रिक्वेस्ट को
जो सर्वर्स सब अच्छी सर्वर्स ट्रैफिक सेंड करुच्ची ओके तो ये केस रे कौन होची सर्वर सेंड कला बाय चांस सपोज गोटे सर्वर डाउन होइला देन से कौन करिवो आ गोटे सर्वर को अवेलेबल सर्वर से सर्वर टा कौन ऑफ थिबा दरकार अवेलेबल थिबा दरकार देन ओनली इट कैन सेंड जदी सर्वर ही ऑफलाइन थिबो देन कौन हो रिक्वेस्ट आसी परिबोनी राइट सर्वर ऑफ ऑन थिबा दरकार ओके so a load balancer performs the following functions so what are the functions it performs distributes client requests or network load efficiently that I am janle and it always ensures high availability so obviously जेतबळे गोटे रिक्वेस्ट को मल्टीपल सर्वर को कोन वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करूची तो आमे एठी कोन भाबियो जे हमर जो एप्लीकेशंस रहउची राइट से एप्लीकेशन तो सबले कोन हाई अवेलेबिलिटी माने सब बळे अवेलेबल थिबो कस्टमर बाय इंडिविजुअल टू यूज So load balancer कौन करना it makes sure that the applications right whatever we are using are always in high availability and reliability by sending requests only to the servers that are online जो सर्विस ऑनलाइन रोजी ये कौन रिक्वेस्ट पठोची तो will make sure that we get that सेति पय AWS claim करूची कौन 99.99% is high availability ताने कौन तार कौन मल्टीपल जोन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन रे मल्टीपल सर्वर्स और मल्टीपल रीजन रे मल्टीपल डाटा सेंटर रे मल्टीपल सर्वर्स आर रनिंग तो से फीचर्स तार अवेलेबिलिटी अछि जोटा हम जे चाहू हम एप्लीकेशंस को हमें मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन रे रन करिया पे देन वी कैन डू दैट इफ वन सर्वर गोज डाउन इन वन अवेलेबिलिटी जोन द अदर सर्वर विल बी अवेलेबल राइट विषय में बहुत किसी जानिबा नेटवर्किंग पढ़ला बेले डोंट वरी सो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू ऐड और सब्सट्रैक्ट सर्वर्स एज डिमांड डिक्टेट्स सो जेते बेले हम डिमांड बढ़िबो सर्वर हम ऐड करि परिबा डिमांड पळेबो सर्वर को हमें रिमूव करि परिबा ऑटो स्केलिंग यूज करि राइट with the combination of auto scaling and load balancing so first understand the load balancing and then we'll talk about auto scaling so benefits of load balancing kono reduced downtime, scalability, right? Redundancy, flexibility, and efficiency. All are these benefits we are going to get it. So there are 4 types of load balancers available currently. Application load balancer, network load balancer, gateway load balancer, and classic load balancer. The classic load balancer is no more we are going to use this one as we are going only into the application load balancer. So these are the load balancer being used for different purposes. Okay, application load balancer gote alga different pa use hochi network load balancer kom pa use kar now details am janiba. Okay, so application load balancer kon use hochi are best suited for the load balancing of HTTP and HTTPS traffic. Ki koibo HTTP और HTTPS विषय में की कोई परियो का विषय में डिस्कशन करूचे HTTP और HTTPS sir HTTPS टा more secure and HTTP port 8080 HTTPS port I think 443 HTTPS वाला 443 HTTP वाला 8080 it's not secure HTTPS secure it's okay but हमें जो HTTP विषय रे कथा हो होचे राइट एटा माने एक्चुअली कोन हम कोड यूज करू छै क्वेश्चन चला हम कोड वेयर वी आर यूजिंग दिस HTTP सब कुछ बड़े हमें मतलब एप्लीकेशंस यूज कर Apache Tomcat server Tomcating server okay Tomcat server that's okay so firstly कोन होला हमें डे टू डे लाइफ रे डेली सकाळ उठिले मोबाइल देखले HTTP यूज करू छै एटा गोटे कोन हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जोटा कि हमर वेब ब्राउजर हमें google.com माइले भी HTTPS यूज होची facebook.com मारछ HTTPS यूज होची दो तमे कोन आजकल मोबाइल रे एप्लीकेशंस तमे क्लिक करी करी देखो दोछ बट तमे वेब यूज करू छ लैपटॉप रे कोन तमे सेंता बळे तमे HTTPS और HTTP एटा कोन हला वेब थ्रू वेब वी कैन कनेक्ट टू द applications web applications तापे हमें HTTP और HTTPS यूज करू छ right so they operate at the layer 7 तो जो layer 7 कोड एटा कोन एटा
এটা actually ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଲେୟାର। ତ ତମେ ଯେ ପଢି ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛ ଜାଣିଥିବ ନେଟୱାର୍କିଂ ଲେୟର୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାଇଟ୍। इंजीनियरिंग गोटे टॉपिक्स थियो नेटवर्किंग टॉपिक्स जो तरी के हमें इन नेटवर्किंग लेयर्स विषय जानते राइट। देयर आर 7 लेयर्स ऑफ नेटवर्किंग राइट। तो ता विषय हमें जानिबा हम बते देबी नेक्स्ट स्लाइड रे नेटवर्किंग लेयर्स कौन कौन नेटवर्किंग लेयर्स। तो मन रखता हो एटा ALB जोटा कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कम्स अंडर द लेयर 7 ओके। लेयर 7 कौन बतेबी। They are intelligent and we can create advanced request routing sending specified request to specific web server. तो सेति हमें लोड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर दे तमे एप्लीकेशंस वेब एप्लीकेशंस ऊपर काम करूचो राइट। एप्लीकेशंस पाई तमे देन यू कैन गो विथ दिस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर केतन यूज करिवो ना these are best suited for load balancing of TCP traffic. This is for hypertext transfer protocol and this is for what is this TCP transfer control protocol right. What is this TCP transmission control protocol right. So transmission so TCP traffic where extreme performance is required जोटी की तुमको हाई परफॉर्मेंस दरकार तो समय सेठी तमे कोन लोड बैलेंसर यूज करि परिबो। नेटवर्क ऊपर तमे जते बळे काम करूछ मोर वर्किंग ऑन द नेटवर्क साइड मल्टीपल नेटवर्क्स तमे काम करूछ तम एप्लीकेशंस को नो चाहो छ तमरो जंती डेटाबेस रिलेटेड बिग डेटा डेटा वेयरहाउस रे काम करूछ तुमको हाई परफॉर्मेंस दरकार नेटवर्किंग पर देन यू कैन गो विथ द नेटवर्क लोड बैलेंसिंग and it operates at layer 4 layer 4 होची हमर ट्रांसपोर्ट लेयर ओके। मतलब से जानिबा हमें layer 4 and network load balancer are capable of handling millions of requests per second. तो तुम पचाइबा what is the difference between this application load balancer and network load balancer one where should we use the network load balancer then you should say when we need some extreme performance high performance traffic network traffic then we go with network load balancer okay. Something classic load balancer it's a legacy load balancer जंते हम कहले एटा भी से layer 7 जंते application load balancer layer 7 रे HTTP HTTPS रे काम करछ एटा भी से 7 ने काम करछ एटा mostly we are not going to use it now okay. Let's talk about this OSI model. So both na transport layer जो layer 4 ता TCP पाई application layer first तो जो OSI model right रोची नेटवर्किंग मॉडल आम कह नेटवर्किंग ओएसआई मॉडल जो थे आम कौन कंप्लीटली कौन 7टा लेयर रोची आमर वी हैव 7 लेयर्स राइट। तो ये 7 लेयर्स विषय आम जानिए फर्स्ट लेयर रोची कि आमर फिजिकल लेयर राइट। फिजिकल लेयर आम कौन करछे ना आमर जोटा कि राउटर्स रोची राइट जमती आमर कौन एयरटेल दर आमर नेटवर्किंग वाईफाई राउटर आम लगेले जेकोसी वाईफाई राउटर हो हब हो राइट रिपीटर कनेक्टर फिजिकल स्ट्रक्चर जोटा कि फिजिकल लेयर बा फिजिकल मॉडल रे सेटा हम काउंट करिबा ओके। तो बेसिकली आम जो ओएसआई देखिले सो ओएसआई रो एक्चुअल काम कोन ता ना फुल फॉर्म कोन ओएसआई रो ना ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओके। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस बा ओएसआई मॉडल दैट इज अ नेटवर्क ओएसआई मॉडल नेटवर्क मॉडल ओके। तो डिफरेंट कोन हमरो डिफरेंट लेयर केमती डिफरेंट नेटवर्क्स केमती काम करछि ता विषय हम जानिबा। तो फर्स्ट थिंग कहली फिजिकल लेयर से हम केमती कोन काम करछे डाटा लिंक लेयर इथरनेट पीपीपी ब्रिज नेटवर्क लेयर हम जानले आईपी प्रोटोकॉल्स एंड ऑल दिस थिंग्स नेटवर्क लेयर्स ट्रांसपोर्ट लेयर 4 एंड टू एंड कनेक्शन टीसीपी यूडीपी ओके। सेशन जोटा कि हमर सॉकेट विन सॉकेट सब प्रेजेंटेशंस रोची जोटा हमर
syntax layer বা SSL SSH already আমি ইউজ করছি, ওটাকে আমরা প্রেজেন্টেশন লেয়ারে যাচ্ছি, MPs MPEG JPEG রাইট। application जोटाकि HTTP SSH ये सब application DNS application layer एक सातटा मॉडल मन रखता जस्ट मैं गूगल सर्च कर तो हम कंप्लीट डिटेल्स रे पढ़े आसे। ओके नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द cross zone load balancing. Cross zone load balancing कौन? Now cross zone load balancing enables you to load balance across multiple availability zone. So in normal load balancing, in one availability zone load balancing, what we do? We transfer the traffic to the available servers in the same availability zone, right? Normally we do, but in case of cross zone load balancing कौन होची ना, हमें कौन करवे जो traffic आसुची, right? Through the load balancing. So what we can do, we can transfer those traffics or requests to the available server in different availability zone, right? So multiple availability zone, so cross zone we can send it. So let's see what type of, in cross zone load balancing also we have different ways how we can send it, right? I'll show you how we can send or route the traffics. So in case of no cross zone load balancing, means if you are not using cross zone load balancing, like if you are using only one zone or one availability zone, what will happen, right? Or if you are using the switching mechanism manually to switch, how it will be done. See, in case of no cross zone load balancing, what happened? Suppose here we are using one technique called the Route 53, one of the service which we are going to learn in our upcoming classes. Okay, in the networking chapter in the VPC. Before VPC, we are going to learn this Route 53. So what happened? The user request, whatever it comes, you can say here we are using Route 53 to route the requests or the traffic received from the different users. So we have two availability zone here, availability zone 1 and availability zone 2, 1A 1B, right? So आमे देखियो एटी availability zone रे जो प्रत्येक availability zone एटी आमे कौन यूज करछे गोटे load balancer, एटी गोटे आमे application load balancer यूज हेछि, एटी गोटे also application load balancer, तो दुईटा load balancer आमे यूज हेछि एटी। तो एटी ए zone रे हमर ALB गोटे रखाइछि जोटा कि a particular zone रे जितना server अछि, right, ताको equally distribute करछि requests received from the users, right? So here whatever we have 4 available servers, so each server we are distributing the request 12.5% each. So total if we include, right, it will be calculate, it will be 50%, because we have 2 servers. Whatever the request it comes, right, 100%, it's getting divided 50% this side. Okay, so एठी हम जे देखिबा ई 1A availability zone रे हमर केतरा 4टा सर्वर अछि, बट 1B रे हमर कोन गोटे सर्वर अछि, राइट? तो ए केस रे कोन होछि, धरो 10टा रिक्वेस्ट आसला, 10टा रु कोन हला ना 5टा रिक्वेस्ट कोन सेंड हला availability zone 1A को, आ 5टा रिक्वेस्ट आसला availability zone 1B को, राइट? तो जो 5टा रिक्वेस्ट आसला हमर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कोन करछि ना ताकू जो सर्वर रहिला, राइट, 4टा सर्वर अछि, राइट, ए 4टा सर्वर के इक्वली 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड कर दबा, राइट, 111 का गोटे 2 रिक्वेस्ट डिवाइड कर दबा। तो एठी कोन हला ना सर्वर कोन कला ना सपोज ओनली 12.5% यूज्ड, तमाने कोन हला सिस्टम लेस वर्क पाइला, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हे गला, तो फास्टर परफॉर्मेंस रहिला, राइट? बट ए केस रे कोन होछि ना जो 5टा रिक्वेस्ट आसला बाय 50%, दैट is getting handled by only one server. तो ए one server कोन होला 50% वर्कलोड कोन होला ए गोटे सर्वर एका नउछि 50% वर्कलोड। सो एटा बेसी कोन
सर्वर लोड नौची राइट तो 50% तो ये जो लोड बैलेंसिंग विदाउट यूजिंग क्रॉस जोन कौन होची ना एठी आमे गोटे सिस्टम को अधिका काम देले बाकी सिस्टम को कौन नॉर्मल अल्प अल्प काम देले बट ए केस रे कौन होची जदी बाय चांस 50% गोटे काम असला सर्वर कैपेसिटी इज नॉट available to handle this one so it will crash right तो ये जगह आम कौन करबा ना क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग यूज करबा जोटा कौन हम ना ये जो लोड बैलेंसर ये जो रिक्वेस्ट 50% आसिला से कौन करबा ना ट्रांसफर कर दो आर अवेलेबिलिटी जोन को राइट तो टोटल वाला केतरा पांचटा सर्वर आसी गला 10% यूज कला तो एटी भी सेमती गोटे क्रॉस जोन रे राइट तो आम क्रॉस जोन रे देखिए एटा बर्तमान जोड़ा मु एग्जैक्टली ड्रॉ कली एटी राइट क्रॉस जोन रे तो क्रॉस जोन रे कोन हो से 50% आसुची बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हमर जतिटा ई पांचटा सर्वर रहिला राइट चारटा सर्वर रहिला कोडी हमर 1 ए रे 1 बी रे रहिला हमर गोटे सर्वर तो एटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है 20% तो सेटा हमर सेति पे क्रॉस जोन जो बैलेंसिंग लोड बैलेंसिंग रोची एटा बेनिफिट्स हमर मते क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग तो मेथड करबो एटा फ्री नो ओपन माने तुमको पेमेंट करिया पड़ियो ता पई ओके दे विल चार्ज फॉर इट सो तुम बते देबी केम तुम यूज करिवो बट लोड बैलेंसर एग्जांपल तुमको दे देबी बट एथि मन रखता लोड बैलेंसर जेतबे हम यूज करबा हमें तो गुड लोड बैलेंसर मीनिंग हिला कोन हमें ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करबा एमंग मल्टीपल अदर अवेलेबल सर्वर तो सेति पे हमको मल्टीपल सर्वर नवा पड़ियो तो मल्टीपल सर्वर नवा माने हमें सर्वर को जेतबे मल्टीपल सर्वर लेलो इट विल नॉट कम अंडर द फ्री टियर राइट तो हमको पे करिया पड़ियो सो जेतबे तुम प्रैक्टिस करछो बी केयरफुल जेतरा भी सर्वर तुम यूज करिवो तापर इमीडिएटली जब टर्मिनेट करिया पड़ियो तुमको अदरवाइज it will be chargeable right so let's come down तो बुझी पाइला एटा राइट केमती क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग काम करूची राइट तो हमें एबे गोटे प्रैक्टिस करबे लोड बैलेंसर नॉर्मली प्रैक्टिस करबे हम बते देबी तो केमती हमें टू द EC2 सो लोड बैलेंसर हम कोड रहबो EC2 सर्विस रे राइट तो हमें EC2 सर्विस रे लोड बैलेंसर पाई परिबा तो मते इंस्टेंसेस को जाउची मोर गोटे इंस्टेंस ऑलरेडी रन होची लेट मी स्टॉप दिस ओके लेट इट बी देयर स्टॉप ओके सो हम कौन करबा एट देखबा कोन लोड बैलेंसिंग राइट EC2 सर्विस भीतर हमर लोड बैलेंसिंग आसीबा ता भीतर ऑटो स्केलिंग भी अछि हम नेक्स्ट क्लास रे ऑटो स्केलिंग पढी तो लोड बैलेंसिंग लोड बैलेंसर राइट तो ये लोड बैलेंसर रे हम देखिबा केमती कोन लोड बैलेंस क्रिएट कर परिबा ता सीधा टारगेट ग्रुप कोन राइट अब हम तुमको भी जस्ट गोटे छोटो लैब क्लास करबा राइट तो हमें कौन करिया फर्स्ट जेतबे लोड बैलेंसिंग में सेटअप गोटे करबा हम देटी देखि दिया लोड बैलेंसर फर्स्ट चेक करबा तो लोड बैलेंसर हम ओठी कोन क्रिएट लोड बैलेंसर हम लोड बैलेंसर क्रिएट करिया जोटा कि हमर एप्लीकेशन रे हम यूज करि परिबा राइट लोड बैलेंस क्रिएट करबा पूर्वरु हमको कोन कोन हमर रिक्वायरमेंट रहउची राइट मते केतरा सर्वर दरकार को टाइप रो थ्रेशोल्ड हमें सेटअप करबा जोटा कि लोड बैलेंसर ट्रैफिक टा से हमको राउट करिवो तो सेतिर हमें कोन करबा ना टारगेट ग्रुप गोटे क्रिएट करिया फर्स्ट हमें गोटे कोन टारगेट ग्रुप्स गोटे क्रिएट करिबा क्रिएट ग्रुप टारगेट ग्रुप रे केतरा सर्वर तमे लोड बैलेंसर रखिया को चाहूचो राइट तो से हिसाब रे तमे कोन गोटे ग्रुप क्रिएट करिवो तो टारगेट ग्रुप क्रिएट करिया पर हमें कोन जानथिले जे लोड बैलेंसर हमें तोले राउट करिवा ट्रैफिक को तो एटा कोन दैट सर्वर शुड बी अवेलेबल right that server should be available so for that what we need to create now few instances right so सेति पे हम कहतली तो जेतो लोड बैलेंसिंग तमे टेस्ट करिवो केयरफुली डेमो प्रैक्टिस करिवो तापर तमे डिलीट कर दो ताको ओके तो मु कोन करछि ना एठी जाई के तीनटा सपोज इंस्टेंस मु क्रिएट करूछि ओके ओटे ऑलरेडी गोटे इंस्टेंस अछि तो एटा ता मु किछि टच करूनी तो मु कोन करबे एठी तीनटा इंस्टेंस मु क्रिएट कर दोछि लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट मोर ऑलरेडी टेम्पलेट्स अच्छी जोटा कि L23 सर्वर ओके
Ansible demo तार कौन की यूज करछि Ansible demo की नउछि अच्छा मतलब किसी चेंजेस करिवार नाही ऑलरेडी जहा जहा डिफॉल्ट नउछि जेनकिंस नै डिफॉल्ट ठीक अछि परफेक्ट आ मते किसी चेंजेस करिया नाही खाली मते मु तीनटा सर्वर क्रिएट कर दोछि ओके तीनटा सर्वर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस तीनटा सो टाइम लगे ठीक है लेट्स सी ओके तीनटा सर्वर स्टार्ट हला sorry guys I was speaking on mute okay तमे इंस्टेंस रे बर्तमान मु कोन करना जो हम अंडरस्टैंडिंग हिसाब रे मु कोन करना तीनटा ना चेंज कर देली राइट S1 S2 S3 राइट तीनटा ना चेंज कर देली तम हिसाब तम रिक्वायरमेंट हिसाब तम ना दो मु खाली जस्ट S1 S2 S3 तीनटा सर्वर ना दे देली ओके तबरे एबे हम कोडी जीवा ना लोड बैलेंसिंग रे टारगेट ग्रुप जे गोटे ग्रुप तयारी करिवा राइट से ग्रुप होची कोन ना गोटे ग्रुप रे हमें सेट करिवा हमर को सर्वर को हमें लोड बैलेंस भितर ऐड करिवा राइट तार गोटे ग्रुप क्रिएट करिवा तमे कोन करिवा क्रिएट टारगेट ग्रुप एठी देखो तमे हमें जेतु लोड बैलेंसिंग क्रिएट करिवा राइट तो को हिसाब रे हमको सर्वर सहित कनेक्शन दरकार तो हिसाब रे इंस्टेंसेस जदी डायरेक्ट इंस्टेंस तमे यूज करछे देन इंस्टेंस यूज करिवो आईपी एड्रेस जे कोनसी आईपी एड्रेस सर्वर आईपी एड्रेस दउ चाहछो कर परियो लैम्डा फंक्शन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जे अछि ऑलरेडी ता भितर करिया पे हम यूज कर परियो तो मु एठी कोन करछि ना हम जेतु इंस्टेंस तीनटा मु क्रिएट करली से इंस्टेंस तीनटा यूज करछि तो एठी कोन करछि ना सपोर्ट्स लोड बैलेंसिंग टू instances within a specific VPC. Supports load balancing to instances within a specific VPC. How facilitates to the use auto scaling. तो ये जो ऑप्शन था मैं यूज करें ऑटो स्केलिंग सहित ऐड करिया पे यूज होची बाकी कौन कौन सब केमती तमे यूज करिवो तार डिटेल सब देछि ओके तमे वर्तमान इंस्टेंसेस ऊपर नै देखिबा केमती यूज करि परिबा नेक्स्ट हम गोटे टारगेट ग्रुप नै दे दियो ना दे दियो ओके मु जस्ट दे देली my target group something ना दे तो मैं हिसाब से तुम्हें ना दबो ओके my target group प्रोटोकॉल मु http यूज करूची जेतु मु apache सर्वर वर्तमान रन करया पे इंस्टॉल करया पे जाउची सर्वर रे तो रन कर देली तो एठी कोन हला 80 पोर्ट नंबर मु देली 80 ओके तापर कोन हला VPC डिफॉल्ट VPC बेतोना में अपन VPC पढ़ी ने तापर तो डिफॉल्ट VPC रो प्रोटोकॉल वर्जन HTTP कोड हेल्थ चेक रहियो माने सर्वर लाइव अछि कि नाही बोली तार हेल्थ चेक कोन रूट डायरेक्टरी से चेक करी नॉर्मल प्रोटोकॉल हम HTTP देइ छै रहिला तापर एडवांस चेक सेटिंग्स तमे जे चाहछो दे परिबो हेल्दी थ्रेशोल्ड केतरा तमे चाहछो अनहेल्दी थ्रेशोल्ड कोन तो ट्रैफिक फॉल्ट ऊपर तमे डिपेंड करो तो हेल्दी थ्रेशोल्ड माने द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव हेल्थ चेक्स सक्सेस आर रिक्वायर्ड बिफोर कंसीडरिंग एन अनहेल्दी टारगेट माने तमे हेल्दी थ्रेशोल्ड देखियो केते थर नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव हेल्थ चेक पांच थर चेक कला परे जदी देखियो सर्वर गोटे स्टार्ट होउनी ताले से कोन अनहेल्दी नबो ओके ता पूर्व पांच थर से चेक करिवो बट मेटी टाइम यदि कमे दवा पई तो हमें कोन करबे 2 times we can do it or 3 make it unhealthy threshold the number of consecutive health check failures kete thara fail hele 3 thara ठीक अछि टाइम आउट
5 सेकंड पर टाइम आउट हो इंटरवल 30 सेकंड अप्रोक्सीमेटली अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन हेल्थ चेक्स तो जो हेल्थ चेक नंबर ऑफ हेल्थ चेक्स हमें देले केते इंटरवल जेहेतु आम तीन सर्वर ब्याले कौन एप्लिकेशन लोड बैलेंस को टार्गेट गोटे ग्रुप क्रिएट कर राइट से ग्रुप टाक आम एप्लिकेशन लोड बैलेंस सहित ऐड करिया तो केते इंटरवल से सब जगह सर्वर हेल्थ चेक करियो ता डिटेल्स आम देल सक्सेस कोड 200 दैट्स ऑल बाकी टैग ऑप्शनल अछि तम हिसाब तमे देबा राइट नेक्स्ट ओके तो ये सब सर्वर वर्तमान अवेलेबल अच्छी से मु सर्वर बिफोर क्रिएट कली राइट तो रजिस्टर टार्गेट जो ग्रुप टा कले से ग्रुप रे को सर्वर तमे ऐड करिवो तमे सिलेक्ट करिवो सपोज मैं ये तीनटा सर्वर ऐड कर दोछि ओके क्रिएट टारगेट ग्रुप कंटिन्यू ओके feedback मागुची तो you can give the feedback cancel it now so एटी कौन कहला unhealthy 0 healthy 0 बर्तमान हमर हेल्थ चेक स्टार्ट एंड जस्ट ग्रुप गुटे हमें क्रिएट करिचे जस्ट वी क्रिएटेड ए ग्रुप तार पूरा डिटेल्स से दउची कौन सब अच्छी राइट तो हमें एटी कौन कहले ना जो तीनटा सर्वर ऐड कल एटी कौन हमें रजिस्टर टारगेट्स करिंग ओके ता पूर्वरु ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲେଟ ଟା ୟୁଜ କଲେ ସେ ଟେମ୍ପଲେଟ ରେ ଆମେ यूजर डिफाइंड ଦେଇଛେ ନା ନାହିଁ ମତେ ଗୋଟେ କଣ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାର ଥିଲା एक्चुअली यूज एडवांस डिटेल्स यूजर डाटा सेक्शंस यूजर डाटा किछ दिया है ओके मते एक्चुअली कौन कराया थिला मते गोटे अपाची सर्वर इंस्टॉल करियार थिला राइट तो तापाई मु सेटिंग न जाई एबे कौन करिवि देखो मते गोटे अपाची सर्वर इंस्टॉल करिया गले मते कौन करिया पड़ियो अच्छा एडा गोटे आज ए डेवऑप्स सिसरे मते रियल टाइम रे मते कुह बर्तमान एबे गोटे रियल टाइम रिक्वायरमेंट मु तुमको दउची ठीक अछि ए रिक्वायरमेंट हिसाब रे मोर बर्तमान तीनटा सर्वर मु नै गली तो मते बर्तमान अपाची सर्वर आ गोटे छोट एप्लिकेशन डिप्लॉय करियार अछि मु एटा केमिति करि परिबि कि मते कहइबो रियल टाइम रिक्वायरमेंट गोटे रियल टाइम रिक्वायरमेंट मु सपोज गोटे कंपनी राइट मु तमे मोर डेवऑप्स रिसोर्सेस काम करछो मो पई तो मु तीनटा सर्वर हमरो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम क्रिएट कर दल तुमको दे देले तो तार रिक्वायरमेंट तुमको दियाले तमे एथरे अपाची सर्वर इंस्टॉल करिवो आ गोटे कोन पीएचपी एप्लिकेशन हो कि एचटीएमएल एप्लिकेशन को डिप्लॉय करिवो तार अप्रोच ता तमर कोन हो मते को जल्दी এটা एक्चुअली रियल टाइम रे काम तो मतलब बताओ आप तो ठीक है सर ओके हेलो ए केस रे हेलो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस तमे कोन करबा को चाहूछो तमु सपोज मु जे गोटे कंपनी मु डेवऑप्स इंप्लीमेंट करबा को जाउछु मु जानि नि किछि सेति पे मु तुमको हायर करिछि राइट बा करबा को जाउछि तुम धरो इंटरव्यू क्वेश्चंस पचाउछि मु नुवा फ्रेश तीनटा सर्वर क्रिएट कर दियाला मते मोर रिक्वायरमेंट अछि एटा तमे केमिति करिवो as a DevOps engineer what is your thought process how you will implement this requirement no idea come on man simple right कौन तुम एटी यूज करिवो को टूल यूज कर तुमको इजी हबो एंसिबल Ansible right तमे Ansible यूज कले हमको इजी हबो so we can go ahead and use Ansible server simple right एते भाभी बार कोन अछि एतरे तमे Ansible रे यूज करे कोन हला जे त हम रिक्वायरमेंट अछि कोन Apache सर्वर इंस्टॉलेशंस पई तो ता पे हमको कोन प्लेबुक लिखिया पड़िबो प्लेबुक रे हमें
Apache server install करिवो ताहे तो मु कहथि गोटे एप्लीकेशन डिप्लॉय करिया पई तो एप्लीकेशन को तमे डिप्लॉय करिवो डिप्लॉय करिया पूर्व एप्लीकेशन कोठी अछि कोन अछि ता डिटेल्स कार्ड तमे नबो डेवलपर ठार नबो राइट एई हिसाब रे तमे रियल टाइम रे काम करिवो राइट तो एठी मु एंसिबल यूज करिया पई चाहुनी एठी मु चाहुची आ गोटे AWS रे गोटे फीचर अछि जोटा कि हमें कहूचे यूजर डेटा सेक्शन ऑलरेडी हमें हमर कोन AWS क्लासेस रे EC2 क्लासेस हम ऑलरेडी पढ़ी जेटा जो माने क्लास करछे पढ़ीचो यूजर डेटा सेक्शन सो यूजर डेटा सेक्शन रे हमें कोन करिया ना जहां भी हमको यूजर डेटा सेक्शन कहबो बा तुमको हमें कोन करि परबे ना बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कहंती बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट जोता कि तमे गोटे स्क्रिप्ट लिखिबो सेल स्क्रिप्ट लिखिबो जोटा कि तमे जेता हमें लाइनक्स मशीन यूज करछे राइट जो स्क्रिप्ट लिखिबो सेटा एग्जीक्यूट हबो बूट टाइम रे बा जतला हमें मशीन क्रिएशन हबो से क्रिएशन टाइम रे ही से स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हबो ओके तो तापे हमें कोन करे पड़े यूजर डाटा सेक्शन रे लिखिबा पड़िबो तो मु एटा कोन करछि जेतो ऑलरेडी मशीन क्रिएट करछि आइदर मते एबे कोन मशीन ऑलरेडी क्रिएटेड हे जायछि तो मते मैनुअली तीनटा मशीन को लॉगिन कर इंस्टॉल करे पड़िबो या फिर मते गोटे कोन एंसिबल प्लेबुक लिखिकरी ता भीतर एग्जीक्यूट करे पड़िबो राइट सर्वर इंस्टॉलेशंस करिया पड़िबो राइट तो मु वर्तमान कोन करछि न करिकरी ताकू वर्तमान टर्मिनेट करछि तीन थर लॉगिन करी इंस्टॉल करिया अपेक्षा मु गोटे काम करछि okay let's log in 3 times and do it or else what we can do user data section रे हमें कोन करबा ऐड करि परिबा राइट तो मु कोन करछि वर्तमान एटा टर्मिनेट कर दोछि ऑल 3 लेट्स टर्मिनेट तमरो जो टेम्पलेट अछि से टेम्पलेट को मु टिके मॉडिफाई करूछि ये जो टेम्पलेट अछि ओके तो से टेम्पलेट को मु मॉडिफाई करूछि तो हमें ऑलरेडी लॉन्च टेम्पलेट विषय जानिथिले राइट तो आज भी आउथर मु लॉन्च टेम्पलेट विषय देखै दछि ऑलरेडी मोर ओटे टेम्पलेट 1 वर्जन लेटेस्ट वर्जन 1 अछि डिफॉल्ट वर्जन 1 लेटेस्ट वर्जन 1 तो मु चाहू छी एटा मॉडिफाई करिया पई राइट मॉडिफाई द टेम्पलेट तो मैं ठीक कोन करछि टेम्पलेट वर्जन जा अछि डिस्क्रिप्शन जा तमे दउ चाहू छ DRT suppose dev Apache dev लिखि दोछि खाली Apache dev version template तो source template launch template new version मतलब source template ये जो एक नंबर टेम्पलेट गोटी ही टेम्पलेट अछि source template डिफॉल्ट नहीं गला राइट और जहां अच्छी से था मतलब किसी चेंजेस करियर नहीं ओके व्हाटएवर इज देयर लेट इट बी जहां अच्छी से तो खाली कौन चेंज करियर अछि ना एडवांस डिटेल्स को जीवार अछि एटी यूजर डेटा सेक्शंस को जीवार अछि यूजर डेटा सेक्शंस राइट यूजर डेटा ऑप्शनल सेति पई मुझे किछि देइ नथली तो यूजर डेटा सेक्शन रे मोर रिक्वायरमेंट ता कोन अछि रिक्वायरमेंट अछि कोन मते एप्लीकेशन गोटे इंस्टॉल करियर अछि राइट को एप्लीकेशन ना अपाची सर्वर गोटे अपाची httpd एप्लीकेशन इंस्टॉल करियर अछि तो एटा जेतु लाइनक्स मशीन मु लाइनक्स कमांड लिखिबि किछि राइट तापे मोटे शेल स्क्रिप्ट लिखुछि bin bash ओके शेल स्क्रिप्ट तो जानि छै केमति लिखा हुए तो bin bash हेलो सर इंटरप्रेटर लाइन हां हेलो सर से एक्चुअली जो हम कहथिल ना हम सर्वर ओडा स्विच ओवर हेदिला स्विच बैक होछि तो मते बे ये क्लास रो ओगडा मो रेकॉर्डेड क्लास देखली अच्छा अच्छा तुम जाओ अच्छा ठीक है मु तुम रिकॉर्डिंग देखि दबो ठीक है हां सो हमें कोन करिया शेल स्क्रिप्ट एठी मु लिखुछि राइट तो ऑलरेडी गोटे शेल स्क्रिप्ट में अच्छे रखी लेट्स कॉपी दिस ओके तो एठी कोन करछि मु सिंपल राइट एप्लीकेशन सर्वर 1 दिल्ली ठीक है मैं तो नेक्स्ट टाइम चेंज कर दवा तो एठी कोन कली जस्ट yum अपडेट -y yum इंस्टॉल अपाची सर्वर और किछि गोटे इको स्टेटमेंट रे मु कोन करछि ना var www.html index.html फाइल गोटे क्रिएट करूछि कोठी ना var w इंस्टॉलेशंस परे हमरो अपाची सर्वर रूट डायरेक्टरी रे
ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା index.html ଫାଇଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି with all these details। ତ ମୁଁ ଏଠି application server 1 ଦେଲି, ଗୋଟେ ସର୍ଭର ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି। ଓକେ, ତ ଲେଟ୍ସ ସି ବାକି ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଲେଟ୍ସ ଗो ahead and create template version। ତ ନୂଆ version ଗୋଟେ ଏବେ template create ହେଇଗଲା, ରାଇଟ୍। view launch template ଆମର କଣ latest version 2 ଆସିଗଲା, ରାଇଟ୍। ତ ଆମେ ସେଇ template ୟୁଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର different servers create କରିବା। let's go ahead from template। तो एटी हमें वर्जन 1 आउ 2 अच्छी, तो हमें बटन सिलेक्ट करिवा सेकंड वर्जन अपाचे डेव। ओके, डन। बाकी जहाँ अच्छी सही है, आप किसी मत दरकार नहीं बर्तन जहाँ अच्छी सही है, राइट रहिला। बट एटी हमें जेतु देखो यूजर डाटा सेक्शंस को हमें जदी जिबो, एटी जेतु मु फर्स्ट सर्वर एप्लीकेशन यूज करछि, तो मु सेति पई रखी छी एप्लीकेशन। चलो देखो एटा ही हमें टेम्पलेट रे देइदले तो ऑटोमेटिक नहीं गला एप्लीकेशन सर्वर 1। मते किछि चेंजेस करिया बर्तन नहीं, मते गोटे इंस्टेंस नवार अछि, राइट। लेट्स क्रिएट दैट इंस्टेंस। ओके, देन ओके लॉन्च इंस्टेंस। तीनटा करिया छला ना हेगला लॉन्च इंस्टेंस हेगला गोटे। तो हमें तीन थर कर, मु एति पई तीन थर कोछि ना, यूजर डाटा सेक्शन रे मॉडिफाई करिया अछि मते, तो सेति पई। ओके, तो आउ थर जीवा। Let's go ahead and step on template, select queue। ओके, तो हम सीधा जीवी यूजर डाटा सेक्शन रे एटी 2 दे दूची, है ना, सर्वर 2 एप्लीकेशन सर्वर 2। ओके, लॉन्च इंस्टेंस गोटे अछि, लॉन्च इंस्टेंस। देन फंते जीवा आ गोटे सर्वर क्रिएट करबा इंस्टेंसेस। टू तो मैं कौन करछि दैट अगेन ठीक दे दोछि 3। ओके, देन गोटे लॉन्च इंस्टेंस। फाइन। सो चलो देखिए तीनटा हमर सर्वर हम क्रिएट कले वर्तमान, राइट, इंस्टेंसेस। ओके, लेट्स गो एंड गेट दिस। हमें केवल रनिंग इंस्टेंसेस देखिबा चारटा, तो इटा मु रीनेम करे दरकार नहीं, से जेतो ऑलरेडी हमरो सिस्टम इंस्टॉलेशन सब जगह हमरो कोन रन होची वर्तमान, राइट। ये सब हमरो रन होची, तो मु एबे दे दोची सपोज नाम दे दवा, तो हमरो सेठी S1 S2। बट कौन एप्लीकेशन रन होची हमें जानी नहीं, राइट, को सर्वर कोडा टाइम हिसाब रे हमें नाम भी दे पारथांते, बट हमर तो किछि असुविधा नहीं, राइट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द टारगेट ग्रुप्स। टारगेट ग्रुप्स आसिला हमर, तो टारगेट ग्रुप्स को हमें बर्तमान मॉडिफाई करबा, जेतो हमें किछि रजिस्टर करिने। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस टारगेट ग्रुप्स। तो हमें जीवा इट कोन रजिस्टर टारगेट्स, तो जो टारगेट हमें रजिस्टर करिया अछि ताको हमें ऐड करबा। देन तो एठी सब सर्वर कोन रन होची, राइट, ये सब सर्वर रन होची, तो हमके ए तीनटा मते ऐड करिया रजिस्टर करिया अछि। सिलेक्टेड, तापरे include as pending below, remember include as pending below, include as pending। so तीनटा बर्तन हमर ऐड हे गेला pending। now register pending targets। okay, register न कले हबनी, राइट। देखो register कर देली, ये बर्तन तीनटा हेल्थ स्टेटस बर्तन अनयूज्ड अछि, हेल्थ से चेक करूची, राइट। हमर सर्वर रे अपाची सर्वर इंस्टॉल हे जायछि, से बर्तन हेल्थ चेक करछि सर्वर अवेलेबल अछि ना नहीं, सर्वर लाइव अछि ना नहीं, राइट। एबे तीनटा सर्वर अछि अनयूज्ड। हमर केते सेकंड इंटरवल थिला 30 सेकंड इंटरवल ले से हेल्थ चेक करिवो, राइट। जस्ट वेट फॉर 30 सेकंड्स, 30 seconds or 40 seconds से चेक करिवो आइदर हेल्दी की अनहेल्दी। ओके, लेट्स सी। ओके, 3 अनयूज्ड। बर्तमान हमर लोड बैलेंसर कोन अछि, किछि एसोसिएट हेइन,
राइट तीनटा आमे तो रजिस्टर कर देचे बट लोड बालांसर हमर यूज इन सेति पई हमर अनयूज्ड अछि 3 राइट तो हमको गोटे बर्तन लोड बालांसर क्रिएट करिया ओके लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट लोड बालांसर क्रिएट ए लोड बालांसर ओके तो लोड बालांसर हमें क्रिएट करिया तीनटा प्रकार आज देखौची चारिटा एक्चुअल देखौची गोटे क्लासिक लोड बालांसर अछि तळे बट हमें यूज करबा नेलु एप्लिकेशन लोड बालांसर नेटवर्क लोड बालांसर आ गोटे कोन गेटवे लोड बालांसर ओके सो हमें एप्लिकेशन लोड बालांसर गोटे क्रिएट करिवा जोटा कि एचटीटीपी हम यूज करूचे राइट क्रिएट सिलेक्ट जहाँ भी गोटे ना दे दियो माई एलबी ओके इंटरनेट फेसिंग तो हमें इंटरनेट फेसिंग ही यूज करूचे राइट IPv4 यस BPC डिफॉल्ट लेट इट बी अवेलेबिलिटी जोन सबनेट्स जेकोसी सबनेट जो अवेलेबिलिटी जोन तमे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में सिलेक्ट करया पे चाहो तमे सिलेक्ट करि परिबो सिलेक्ट एटलीस्ट 2 ओके मैं दीटा सिलेक्ट करली 1A 1B सिक्योरिटी ग्रुप्स तमे डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स नबो बा जत्रा जति अवेलेबल जो सिक्योरिटी ग्रुप अछि तमे चाहो यूज करया पे यूज करि पारे सपोज मु जेनकिंस सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड करली एतरे लिसनर्स राउटिंग हमें कोन देचे 80 ओके तो एटी अच्छी कौन सिलेक्ट ए ग्रुप जो हमें ग्रुप टा क्रिएट करथिले माने अछि राइट जस्ट नाउ वी क्रिएटेड द ग्रुप राइट सिलेक्ट द ग्रुप ए ग्रुप टा टारगेट हैला राइट राउटिंग करिवो तो हमर जो लोड बैलेंसर लिसनर्स एंड राउटिंग कोटी की राउट करिवो एक ग्रुप रे हमर तीनटा सर्वर हमें ऐड करिचे राइट जदि नथिबो हम कोन क्रिएट टारगेट ग्रुप एबे करिया पड़ी थांता सेति पे हमें कोन करना आगुरु तो ग्रुप टा टारगेट क्रिएट कर दीचे गोटे ग्रुप तो बर्तमान जदि नथांता हम एटी क्रिएट करि पारतांते ओके तो क्रिएटेड देन एटा ऑप्शनल अछि आ किछि हमकु दरकार नै बस जा अछि से राइट लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट द लोड balancer okay successfully created load balancer myhel then so status अछि बे provisioning just wait for few seconds जतो एटा एक्टिव हे जिवो राइट से तो हमें चेक करिवा okay so before that let me show you some more things so हमें कोन गोटे एप्लिकेशन ALB बा एप्लिकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट कर देले तो एप्लिकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करला परे हमें वर्तमान देखिबा ये एप्लिकेशन लोड बैलेंसर को हमें केमिति एक्सेस करियो राइट तार DNS नेम हमें यूज करियो एटी देखो लोड बैलेंसर टाइप रहिला एप्लिकेशन राइट स्टेटस अछि होस्टेड जोन को जोन रे होस्ट हेछि एटा तार आईडी BPC केतरा अवेलेबिलिटी जोन कोन 1A 1B हम यूज करिचे राइट तापरे एटी असला लोड बैलेंसर ARN रहिला DNS नेम हमें एक्चुअली ए DNS नेम नै करी हमें एप्लिकेशन करियो बर्तन हमें इंडिविजुअली सर्वर को लॉगिन करिवनी हमें लॉगिन करिया कोन नै करी ना एप्लिकेशन लोड बैलेंसर रो डोमेन नेम तुमको नै करी DNS को नै करी हमें चेंज करिया राइट तो देखो एटा एप्लिकेशन लोड बैलेंसर जो डोमेन नेम सिस्टम टा रहिला DNS टा सेटा हमें यूज करिवा टू कनेक्ट टू द एप्लिकेशन राइट सो एटा हमें नै गले कॉपी करिवा तुम बते देबी केमति बर्तन स्टिल इट इज इन प्रोविजनिंग लेट्स रिफ्रेश इट ओके स्टेटस it will take some time to get it active okay still under provisioning okay तापर परे हम ता पूर्व हम ग्रुप टा चेक कर दवा टारगेट ग्रुप्स को जीवा still unused because provisioning रे चली छि राइट स्टार्ट हेनी आइदर तुमको हेल्दी किबा अनहेल्दी देखेबो ओके बर्तमान 0 हे गला unused 0 टोटल टारगेट 3 राइट तमने इनिशियल बटन इनिशियल चली छि राइट तीनटा से देखो 3 तिला अनयूज्ड बटन तीनटा पड़ेसला बर्तमान मु जदी लोड बैलेंसर को जीबी लेट्स इट्स स्टिल प्रोविजनिंग इट्स नॉट कंप्लीटेड ओके ओके बर्तमान एक्टिव आसी गला देखो एक्टिव राइट तो हमरो लोड बैलेंसर बर्तमान स्टेटस कोन एक्टिव आसी गला हमरो लोड बैलेंसर बर्तमान रेडी ओके सो व्हाट वी कैन डू नाउ लेट्स गो टू द टारगेट एंड सी टारगेट हम कोन चेक करबा अनहेल्दी तीनटा इनिशियलाइजेशन चली छि बर्तमान भी ओके
सी बर्तमान इनिशियल 0 होइके बट हेल्दी आसी गला तीनटा माने हमर तीनटा एक सर्वर जोटा हमें रजिस्टर करितले एप्लिकेशन लोड बैलेंसर हमें गोटे क्रिएट कले ता सते जो ग्रुप टा ऐड करिचे माय टारगेट ग्रुप ए तीनटा जाक सर्वर बर्तमान हेल्थ स्टेटस हेल्दी तीनटा एक सर्वर रन होउची एप्लिकेशन जहां हमरो इंस्टॉल हेइची सब जाक बर्तमान हेल्दी सर्वर वी कैन कनेक्ट सो आमे कोन करबा ना सो सर्वर को कनेक्ट करिया गला आमे कोन करबा इंडिविजुअली गोटे गोटे सर्वर को कनेक्ट कर परिया कोन तार पब्लिक आईपी नै कि तीनटा पब्लिक आईपी नै कि करया बट आमे एक केस रे कोन करबा एटी एक्चुअली कंपनी माने करे कोन इंडिविजुअली एप्लीकेशन नियंदनी से कोन करबा ना डायरेक्ट हमर कोडा यूज करिया आमे डीएनएस नेम कार लोड बैलेंसर राइट तो लोड बैलेंसर रे आमे क्लिक कर ए जो डीएनएस नेम एटी नबा राइट लेट्स सी पुट इट व्हाट इज साइज कौन भाई हमें एक्सेस कर पाने जानछ एटा ही गोटे प्रॉब्लम रोची एचटीटीपीएस नहीं गला राइट यही पे हमें एक्सेस कर पाउनतले तो एचटीटीपी एक्चुअली हमर एटा हम एचटीटीपीएस यूज करनी राइट एचटीटीपी पोर्ट नंबर 80 राइट एटा इंटर सी बर्तमान हम असला कोन को बाकी सब क्लोज कर दोछ मु बर्तमान कोन कली सिंगल सर्वर यूज करिया जगह मु कोन यूज करना एप्लिकेशन लोड बैलेंसर गोटे यूज कले राइट जोटा कि डीएनएस एप्लिकेशन लोड बैलेंसर डीएनएस कंपनी माने करे ए डीएनएस सपोज मोर डीएनएस मोर डोमेन नेम वाला सपोज ranjitswine.com राइट तो मु चाहिले मोर गोटे लोड बैलेंसर यूज कर पाई ranjitswine.com ता ranjitswine.com रे मु कोन करबे आ पांचटा इंस्टेंसेस बा सर्वर मु ऐड कर देबी एज ए टारगेट तो मु जतो गोटे मारी तो ranjitswine.com जो डोमेन मारिबा डीएनएस मारिबी से डीएनएस हिसाब रे मोर जो राउट ट्रैफिक टा राइट ऑटोमेटिकली जो अवेलेबल सर्वर टारगेट ग्रुप रे थिबो ऑटोमेटिकली राउट हबो तो बर्तमान मु एटिको रिफ्रेश करूची देखो बर्तमान चेंज हे गला 2 को 3 2 1 2 3 तीनटा का सर्वर हमर रन होची तीनटा का सर्वर हमर बर्तमान रन होची जेते तर मु एटी रिफ्रेश करची माने कोन गोटे क्लाइंट रे गोटे क्लिक करची जोटा कि मु गोटे रिक्वेस्ट सेंड करची राइट तो क्लाइंट तो जब रिक्वेस्ट सेंड करची लोड बैलेंसर कोन करची ना से ऑटोमेटिकली जो तीनटा सर्वर भितर जे कोनसी गोटे सर्वर को से कोन ट्रैफिक पठेबारे व्यस्त रहउछि देखो ऑटोमेटिकली चेंज होछि तो हमें तीनटा का सर्वर डिफरेंट डिफरेंट आईपी देकि हमें चेंज करूनी तुम एठी 1 2 3 कोन कहलो जस्ट कोन जस्ट देखेबा चाहूछि एक्चुअली काम करूछि केमिति बोली बट नॉर्मली कोन होय ना से जो तीनटा सर्वर रे हमर जते बळे रियल टाइम रे एप्लीकेशन डिप्लॉय होबो से जो एप्लीकेशन ता सेटा गोटिए सिंगल एप्लीकेशन थिबो बिकॉज इक्वल एप्लीकेशन थी राइट से हिसाब रे ही तो हमर सर्वर रिक्वेस्ट करो गोटे जेतु कोन जेमति धर हमर facebook.com हम यूज करछ ओडा एप्लीकेशन सो facebook.com जेतो देखि जे केबे तारा डाउन टाइम रहउछि कि रोनी राइट सो दे हैव यूज्ड डेफिनेटली ए stricter stronger approach to make their application available 100%. They definitely will be using high availability. जोटा कि हमें अचीव करिया कोथरे लोड बैलेंसर यूज करिकरी हमें हाई अवेलेबिलिटी अचीव करि परिबा. Definitely they will be using containers or Docker containers or Kubernetes. They'll be using for the high availability and deployment. But here हमें कौन यूज कर ना गोटे लोड बैलेंसर जोतरे कि हमें देखिले हाउ द ट्रैफिक्स कैन बी राउटेड टू डिफरेंट अवेलेबल सर्वर्स तो जो भी एप्लीकेशन हमें डिप्लॉय करते तीनटा सर्वर है तीनटा का सर्वर है एप्लीकेशन रन होछ राइट जदि हमें कोनसी गोटे सर्वर को सपोज मु टर्मिनेट कर देली गोटे सर्वर टर्मिनेट हे गेले कोन हबो हमर बाकी तीनटा सर्वर बाकी दुईटा सर्वर अवेलेबल थिबो तो जे कोनसी कस्टमर रिक्वेस्ट आसीबो सेटा कोन हैंडल करियो राइट देयर विल बी नो इश्यूज तो बर्तन सब रिक्वेस्ट ए तीनटा का जो सर्वर हम ऐड करछे तो ये जगह हम कोन सिंपल गोटे मु एचटीएमएल लगली तमे ए जगह तमरा रियल एप्लीकेशन तमे डिप्लॉय करि परियो रियल एप्लीकेशन तमे डिप्लॉय करि परियो राइट देन तो बर्तन जानला तुम एप्लीकेशन एएलबी केमती यूज करबा आपको जस्ट जाइकर प्रैक्टिस करो आउ इमीडिएटली कोन करियो प्रैक्टिस सरला परे ताको क्लीन केमती करिवो देखो फर्स्ट हमें कोन करबा ना गोटे जो टारगेट ग्रुप क्रिएट करथले जे टारगेट ग्रुप को टर्मिनेट कर दवा ओके टारगेट ग्रुप टर्मिनेट कर ता पूर्व हमें कोन करबा ए जो सर्वर अछि ताको डी रजिस्टर करबा टारगेट ग्रुप गलो
टार्गेट ग्रुप को मुझे टार्गेट को जो सर्वर अच्छी मुझे फर्स्ट डीरेजिस्टर करदेवी डीरेजिस्टर ओके सब जाक बर्तमान डीरेजिस्टर हो गला हेल्थ स्टेटस ड्रेनिंग ओके डीरेजिस्टर सरला पर तुम कौन करिवो actions delete target group delete okay my target group is currently used by the listener तो कौन टार्गेट ग्रुप लिसनर यूज होची को लिसनर ना लोड बालांसर तो हमें कौन करबा ना लोड बालांसर को जीवा तो लोड बालांसर जाइकरी आगे लोड बालांसर को डिलीट करबा डिलीट लोड बालांसर कंफर्म ओके डिलीट तो सक्सेसफुली डिलीट लोड बालांसर जेतु लोड बालांसर हम टार्गेट ग्रुप यूज करूतला सेति पे हम टार्गेट ग्रुप डिलीट करि पारु नथिले तो एबे कोन करबा टार्गेट ग्रुप को जीवा टार्गेट को जाई डिलीट टार्गेट डिलीट हो गला तो हम एप्लीकेशन लोड बालांसर डिलीट हो गला बट हमर कोन होला जो तीनटा सर्वर हमें क्रिएट करि इंस्टेंसेस दे विल बी रनिंग नाउ राइट तो मैं ये तीनटा सर्वर हमरे क्लीन रे डिलीट कर दे इंस्टेंस टर्मिनेट right s1 s2 s3 terminate delete सर ना तो ये एप्लीकेशन जेतु हमें डिलीट कर देले एबे रिफ्रेश करले हां नॉट रिचेबल लोड बैलेंसर आ नाही जेतु हमें डिलीट कर देले राइट तो ये हिसाब रे हमें लोड बैलेंसर क्रिएट करिया और तीनटा के सर्वर मु टर्मिनेट कर देले ओके गाइस सो दैट्स ऑल